implemented, lots of vested interest will be affected, because these industries, they have a very, very important control over the government. I'm sure if you are making this law effective, you are invoking the principle which is part of our law now, the polluter pays principle. And the greatest polluters of the river Ganga is not only the sort of municipalities, but various big industries. They don't install proper discharge effluents, they throw it on the Ganges without properly treating them. So they will be found liable by courts. So they will not allow a proper, they delay it, as Mr. Mehta says, they will delay it. So it's a very difficult task, it's a very daunting task, but at the same time it's very challenging. Without now we are very late. Unless you can do something very positive and concrete within the next 3-4 years, it will be far too late. And the next, I tell you, next war in this world will be not on oil but on water. I'm absolutely sure. May not be in my lifetime, but you see, another thing, these laws should also emphasize the importance of water preservation. Because unless you harvest water, if you waste water, we don't have unlimited source today, because it's a riparian country, we are having it. And you have thought of future generation. So the law has to think in terms of sustainable development, intergenerational equity, which are all principles in environmental law. If you think of that, preservation of water, that is one aspect of the law which you should take into account. Water harvesting, that should be made mandatory on all municipalities in this country. People's awareness must come. There must be an awareness program, water literacy program. Water literacy is also important. You must know how costly, how important the water is. You think water is nothing. You go to America, they say you can't waste water as if it is money. Their money is cheaper than water. But here we throw water, we waste water. Good water, treated water. That should not be done. So that awareness, that is also, if it has to be comprehensive, those things should also come. You must include a chapter on water preservation, water use. And there the municipalities, the civic bodies have a very great responsibility. Thank you, sir. In fact, I'm going to talk on some of the concern which has been raised, but before that I will come into another question, and then possibly we'll go back to the audience. Sir, one thing you have talked about, I mean all of you, that there should be there should be a proper sanction. And what Justice Ganguly said, that civil sanction is not really a sanction because nobody bothers and it takes years of time. Now, we have also debated this particular concern within ourselves, and some of the experts within our group who deals with the sanctioning and all these issues, they said that it is a very difficult task how you are going to impose the liability, criminal liability on the municipality corporation or the government body who are involved into this mandate of the pollution. So on this case, can I request Dr. Rajendra Singh if you can throw your opinion on this particular issue? Or maybe I will come back to Uday and then I will come back to Sir also to have your opinion on that. मैं न्यायमूर्ति जी के साथ अपनी तरफ से दोबारा बधाई देते हुए कहता हूं कि इस दस्तावेज में नेशनल रिवर गंगा और गंगा बेसिन की डेफिनेशन दी है पेज नंबर 5 पर, लेकिन जो असली चीज है रिवर, उसकी कहीं डेफिनेशन नहीं है। भाई रिवर किसे कहते हैं, क्या होती है रिवर? आप जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत में यदि पंडित मदन मोहन मालवीय जीत पाए लड़ाई हरिद्वार में और गंगा को अविरल बनाने में भीम गोड़ा पर से उसको ओपन करवा पाए, वो एक डेफिनेशन थी गंगा की और नदी की, उस डेफिनेशन के आधार पर। इस दस्तावेज में यदि आप रिवर क्या होती है वो नहीं बताएंगे तो नहीं चलेगा। सबसे पहले गंगा की डेफिनेशन से पहले भी
और गंगा के बेसिन की डेफिनेशन से पहले भी नदी की डेफिनेशन को फोकस करना चाहिए था, क्योंकि ये जो एक्ट है बेसिकली तो एक्ट रिवर के लिए बन रहा है ना। वो हमारी एक बहुत ही बड़ी गंगा है, हम उसको ए श्रेणी की या बड़ी गंगा, एक बड़ी नदी मान सकते हैं, बट बेस जो है इस डॉक्यूमेंट का वो तो हमारी रिवर है। रिवर की डेफिनेशन के बिना ये डिबेट आगे नहीं चल सकती। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी बात में आऊंगा, लेकिन मैं जो जरूरी लगता है वो बताना चाहता हूं कि इस एक्ट में यदि हम रिवर की सही डेफिनेशन अपनी तरफ से डिफाइन करके, चर्चा करके, तय करके रख दें, और प्रियम्बल में फिर दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, वो दांत लगा दें जिसको न्यायमूर्ति जी ने टीथ कहा, वो दांत जो उस दांत को वो तोड़ ना सके। इस वक्त ये एक्ट केवल भारत की जनता के लिए नहीं बना रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़े नेगेटिव फोर्स हैं आपके सामने, वो इस देश की नगर पालिकाएं आपका विरोध नहीं करेंगी। नगर पालिकाओं को विरोध नहीं करना आता। जो सबसे ज्यादा बड़ा विरोधी है आपका वो है आप पॉल्यूट करने वाली इंडस्ट्री। इसलिए उसको कैसे ठीक करना, वो ठीक हो सकता है आपके गंगा बेसिन मैनेजमेंट वाला जो प्लान है, उसी में रिवर को अब इस 21st सेंचुरी के सेकंड डेकेड में हमारी कंट्री को नदियां चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, हाइड्रो पावर चाहिए, लेकिन नदी चाहिए। नदी को बचाने के लिए आप यदि इस एक्ट में शुरुआत करेंगे तो फिर हम लोग आगे तक जा सकते हैं। अब मैं दुबे जी आपकी बात पे आना चाहता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में हमें बहुत सफाई से यह लिखना चाहिए कि नदी की जमीन नदी के लिए, नदी को आजादी चाहिए। जिस तरह से मेरी कंट्री को आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, उसी तरह से नदी को आजादी चाहिए। और नदी की आजादी उसकी जमीन के साथ जुड़ी होती है, उसकी लैंड के साथ जुड़ी होती है। आपकी आज सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट केवल गंगा की जो जमीन है उस पर है। कहीं रिवर व्यू डेवलपमेंट, कहीं फ्रंट व्यू डेवलपमेंट, और सबसे बड़ा एनक्रोचमेंट सरकार कर रही है। NRUM का पैसा देकर रिवर व्यू डेवलपमेंट, फ्रंट व्यू डेवलपमेंट, और इसके सबसे बड़े नमूने आपको कलकत्ता में देखने को मिलेंगे। गंगा की जमीन पर दोनों तरफ घाट बनाने के नाम पर वो जो पुरानी जमीनें थी ट्रस्ट की, वो सब जमीनें ट्रस्ट के साथ मिलकर, मुझे लगता है कि नदी की आजादी रखने के लिए, गंगा की आजादी रखने के लिए ये इसमें कहीं लिखें कि गंगा की जमीन केवल गंगा के लिए और गंगा की आजादी के लिए हमें रखनी है। और जो इस जमीन पर एनक्रोचमेंट करेगा उसको सजा की व्यवस्था हो, जेल जाने की व्यवस्था हो। ना वो कैसे कर सकते हैं सर? कैन यू इम्पोज सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट टू द गवर्नमेंट एजेंसी? दे विल से आई हैव डन इट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी डिसीजन, आई हैव डन इट बिकॉज ऑफ सम डायरेक्शन फ्रॉम कैबिनेट. So how to impose a criminal punishment on that particular person? That is the main concern. प्रोफेसर साहब, जब तक आप सिस्टम पर, वो गवर्नमेंट का सिस्टम हो या वो समाज का सिस्टम हो, वो डेमोक्रेसी में यदि आप डेमोक्रेसी को सामने रख के चल रहे हैं तो ये सिस्टम, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस सिस्टम को आगे लेके जाना? ये तो जनता ने उस सिस्टम को बनाया है और उनको जिम्मेदारी दी है कि आप ये गलत काम गंगा के साथ मत करिए। यदि वो गवर्नमेंट का सिस्टम उस गलत काम को कर रहा है तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। वो अपराधी सरकार हो, वो अपराधी गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक हो। न्यायमूर्ति जी ने बहुत अच्छे से कहा कि भाई यदि आप गंगा को ठीक से रखना चाहते हैं तो फिर गंगा के जो रिश्ते हैं उन रिश्तों का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन रिश्तों का रेस्पेक्ट आप तभी कर पाएंगे जब गवर्नमेंट के जो भी सिस्टम हैं, और वो चाहे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक से काम ना कर रहा हो, चाहे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक से काम ना कर रहा हो, बेसिकली उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनकी ये जिम्मेदारी है और उनको राइट भी दिया है। हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी कम्युनिटी के राइट तो सब छीन लिए, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। ये जो एक्ट है ना प्रोफेसर साहब, ये राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों को जोड़कर टीथ दे सके, ऐसा कुछ अपने को सोचना चाहिए। कैसे वर्ड लिखेंगे वो मुझे नहीं आता, वो तो आप लिख सकते हैं, न्यायमूर्ति जी आपको गाइड कर सकते हैं, वर्ड्स का सिलेक्शन तो आप करें, लेकिन आप ये कर सकते हैं और ये हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है। Okay, thank you. Uday, do you want to talk on this issue?
Yeah, I'll make some quick comments on the point which you raised, admitting this that there are, you know, there are few provisions which need to be, which need to be relooked and which require some more deliberation. But now when we started drafting this law, we always kept in mind that we are not proposing a law which is going to take away all the existing laws. Firstly, and secondly, we never also proposed a law which is going to have a kind of policing model. That what municipality is doing, what other people are doing. What precisely is in our mind is that to give an advisory cum sanction model framework, wherein we would be giving the detail of what is to be done and what is not to be done. And on that, whosoever breaches that norm which is laid down in the law should be punished, be it municipal commissioner, municipal bodies, be it individual, be it industry. Now, this is certainly a matter of deliberation that in what way the breach should be enforced through civil action, criminal action. We have given contempt power to these commissions under Section 55 of the proposed legislation. And I draw attention of the panelists and also to the audience that one of the provisions under Section 10, which talks about duties of the state government and central government, we have stated that this commission shall provide necessary assistance to the central government and the state governments in evolving appropriate scientific and technological tools relating to Chapter 4 and Chapter 5. Chapter 4 talks about activities which are prohibited and which are restricted. Chapter 5 talks about activities which are related to conservation and development. So, through this, what is been intended to address is that this act is going to give a very, precise and very, decisive detail, which is required to maintain the status of river, which is what is being highlighted by Rajendra Singh ji. That through this law, we are trying to maintain the status of river as river. And if you, we have never ever, given or attempted to regulate an activities of the industry or the corporates. That's precisely what has been done in Air Pollution Act or Water Pollution Act, where what has been done is that this, up to this level, if you do pollute the air or water, it is permitted. In this act, the idea is to lay down the norms or the standard which is required to maintain the status of river as river. So the central focal point of this legislation is river, not individual. Activities of individuals, activities of corporates, activities of industries are to be regulated in the light of this focus that whatever activities are to be permitted or to be prohibited always must be in this light that river should have its life, and that's how this law is being enacted. Admitting this fact that this is, I believe, the first deliberation upon extensive deliberation upon this law, and we need to revisit some of the provisions. But the idea underlying enactment of this law is to treat river as river and not to permit any activities of the individual or activities of the industry and to give a sanction to those activities. It is all about protecting the sanctity of Ganga river and river basin. Thanks. Thank you, Uday. I believe you have clarified the framework, and I will come at the end relating to the comprehensive framework. But before that, before I go to the audience, I will request Justice Ganguly to talk on this sanction. Can you really put a criminal sanction on the government agency, sir? No. What Mr. Singh has said that there is a large-scale encroachment of lands adjoining the river, adjoining and abutting the river. If we allow encroachment, then we are allowing virtually pollution, because land is encroached on the river. So there should be some law, because whatever encroachment has taken place is difficult, maybe difficult to evict them. That's a different, I'm not going into that. That there should be some provision in this case